कॉस्ट पर, रीजनेबल प्राइस पर वो लेंस बनाते हैं। तो उनको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मुकेश सिंह आए हुए थे, उनसे हम लोगों ने सुना और उन्होंने अपनी जीवन गाथा जो लीडरशिप के बारे में बताई, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके द्वारा निर्मित जो लेंस है वो कितना एफोर्डेबल है, कितने कम कॉस्ट पर वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आप देखी होंगी कि देश के विभिन्न भागों से कई कुलपति आए हुए हैं, नए सांसद आए हैं। उन लोगों ने अपने संस्थान के बारे में उनकी जो विशिष्ट उपलब्धियाँ को आपके सामने रखें। उसी प्रकार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो नित्य प्रतिदिन प्रयोग हो रहे हैं, उसके बारे में मुकेश शर्मा जो कृषि विभाग के भारत सरकार के निर्देशक वो आए हुए, सेंट्रल फसल बोर्ड के निर्देशक आए थे। उन्होंने रेशम की खेती कैसे झारखंड में होती है, कैसे उसको बढ़ावा जाए, उसके बारे में बोले थे। स्किल डेवलपमेंट के बारे में लोगों ने अपना मार्गदर्शन दिया है। उसी प्रकार से हर विषय के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कुछ न कुछ विशिष्टता प्राप्त है, उनके क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त है। इन लोगों ने अपनी अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया है और मेरा मात्र उद्देश्य यही था कि वो लोग आए हमारे सामने अपने जीवन गाथा के बारे में बतावें, अपनी सफलता के बारे में बतावें, जो हमारे लिए एक उत्प्रेरक का काम करे कि हम भी कैसे समाज को आगे बढ़ावें, हम भी कैसे समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ें। मैं इसके से मेरा नाम हुआ, मैं यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर हूँ रिसोर्चन का और मेरा कार्यालय रांची में है। Give a big round of applause for him. I was talking about him only. He is sitting in front of us. A very learned person. He has strategy he has shared with us, and now also he is giving light of his knowledge to other people who are here. So, Saryu, he is there. GMCMC Skill in Private India Limited. Sri Abhishek Pandit, Director, ISET. R.N. Yadav, VC, ISET University. Dr. Munish Govind, Registrar. Good afternoon, dear friends. Most respected Shri S.K. Singh Sahab, Regional Director, who is sitting here in this beautiful hall. Important speakers sitting here on the dais, young and very smart Chinmay is there, and Mr. Shailesh from Bombay is also there. And I see so many important persons, but many of them have left after this lunch session. Shri Kumar and so many great friends are sitting here. So I have to convey my heartfelt thanks to Shri S.K. Singh Sahab. Yes, may I now request Dr. Kumar Sinha to please come on the dais, please. So, Dr. Kumar Sinha, please put your hands together. Kumar Sinha. So great friend of mine, Shri S.K. Singh Sahab, is present with unwavering commitment and sing in my native books and is great in GCC और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, आपनूस बन के जिनकी हिफाजत हुआ करे, आपनूस बन के जिनकी हिफाजत हुआ करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग हमारे खाने के बाद बड़ा शिथिल हो रहे हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाए तो हम लोग शुरू करते हैं शॉर्ट में। बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग हमारे पास 2-3 स्पीकर्स हैं, हम लोग बहुत शॉर्ट में ही इसको खत्म करेंगे और ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। So friends, actually we have been discussing about the
leadership and all that. There's so many qualities of leadership have been put for. So many qualities are there for a leadership. But as the time is so very short, so I have to say only one thing about the leader. लीडर कौन सा है? लीडर वही है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है, अंधेरों में खुद रास्ता ढूंढ देता है। दोस्तों तो याद रखें, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होते। तो दिस थिंग ऑफ about the leadership and all that. So many leaders are here, leaders are sitting here of the dance and all that. So there are three important speakers. May I now request Chinmay, please come and so kindly be brief, because we are going very deep. So only one my request is. Good afternoon to everyone. My courtesies to the chairperson, Professor S. Singh, sir, and other distinguished guests on the dais. My special courtesies and thanks to Professor S. Singh for giving me the third opportunity to be here and present my views on leadership. To be very honest, I would say that my perspectives on leadership as a humble teacher has a more bottom-up orientation than a top-down one, because I have never had the opportunity of leading a big crowd as such. Being a teacher myself, what I promise you, in Shri, my national summit, yes, sir. you will be given position in first walk itself. Thank you, This is sir. my announcement. So, And you are only second and third speaker. thank you so much. But still, I'm honored. I mean, the audience doesn't matter how many people we have around. What matters is we still have the feelings to listen. And I'm thankful to all those people who are here to to shell out their time to listen to 2 or 3 speakers that are here. I consider myself anyway very fortunate to have started my professional career under some very outstanding academicians, and that is something I really very cherish. Now before I proceed, and this has been my usual habit in the past also, normally I talk about 2-3 issues before I proceed with the presentation. I'll not be taking much time, sir. I'm just trying to wrap it up in 5 minutes. I do not have any slides even. 2 issues I'd like to talk about, which is slightly related to leadership, of course. One is about the farewell message that we received when I worked in Calcutta 10 years ago from a former research head. I worked in a small research center in Kolkata, and I still remember, I put that within quotes, the farewell message that I received from my former head. He said that, make me redundant. This is what he said. I mean, this is something that still rings a bell in my ears. Make me redundant is what he said. He said that I would be the happiest person on earth to come back to this organization again and find that I am no more needed. So this is what New Age leadership is about. New Age leadership is more about, I would say, it's not about clamoring for an authority. It's not about counting the number of people who are working under us. It's not about looking for titles or big designations. It's more about sharing. It's more about giving. It's more about creating next generation of leaders. So another issue which I wanted to talk about is basically Hindustani classical music. As you see, one thing very peculiar about Hindustani classical music is that we have lot many ragas, we have bandishes, we have great gurus. I mean, when I talk about Hindustani classical music, we allow your Bismillah Khan, Ladia Khan, great names like Bismillah Khan, and big gharanas like your Agra, Mewati Gharana, Jodhpur Gharana, Jaipur Gharana. But one thing that we have noticed about this Hindustani classical music is that the great genre of gurus have somehow failed to create the next generation of great singers.
So this classical, beautiful art form of Hindustani classical music has basically remained confined to the limited number of people who have this basically art. I don't know, I mean, I should be thankful to people like Tudela Gopichan, who has created, who has basically sent more people to, he himself did not go to Olympics, but he sent at least 2 people, Saina Nehwal and your other person, Sindhu. So, and this is what he said, that I have been a failure as a player, but I am more successful as a coach. On these 2 basic discussions, I would like to proceed and just I'll show you, I have prepared this presentation to talk about 2 multinational corporations, 2 leading Indian technology there. So these are the 2 broad lessons. He is Jeff Bezos. Thyrocare. We all know about Thyrocare, and normally in my IT classes and supply chain classes, I take example of this company. Why I have selected, I talked about 2 Indian companies. Thyrocare, I find it very unique. Why? Because, you know, when we talk about healthcare, when we talk about preventive diagnostics, there's a lot of small companies in our city. And if I'm to talk about, let's say, go back to 90s, they were totally disorganized. Today we have 3-4 big players like Dr. Lal Pathla, we have companies like SRL, Ranchi and Thyrocare. But why I consider this company iconic is that this company organized a totally disorganized market. Just imagine one person, P. Velumani. This person was drawing a salary of 200 rupees. He was a thyroid scientist working in Hoya Atomic Research Center. He left his job, and see, we all clamor for a government job. And this person thought of leaving his government job. His wife was also in the State Bank of India. He desisted her also, like insisted rather, I'm sorry, to leave her very stable government job. They started Thyrocare. What he did, that the initial seed came from the Provident Fund money. When he left their company, Hoya Atomic Research Center, he got 2 lakhs, and from 2 lakhs in 1996, I tell you, he set up this company, centralized big laboratory in Bombay, very IT intensive. I mean, this company totally runs on IT. There are more than 2,000 franchises all across India who collect samples and send the sample the same day for test in the lab. And the report comes the next day. The very first experience I had of Thyrocare was somewhere around 2007. I tell you, I booked online for a test. The next day, a person came. The same day, I mean, it all came with a barcode, and it's not that I'm marketing this company, but the same technology is today being followed by Dr. Lal Pathla and Ranchi also. But what I'm telling you is that the visionary leader, he totally left out market. Nobody had thought that, and what he did, that he, through the volume, big volume of business, because 50,000 samples go to the centralized lab every day, and there are more than, I tell you, 2 lakh investigations being done by the centralized laboratory. Just imagine an Indian, this is not a foreign company, an Indian company using the best technologies, the state-of-the-art tools, in cutting down the cost of diagnostics. Like I remember 100 rupees, 200 rupees used to be the cost of each test. Today they conduct 70, 80 tests, and that costs barely 800 rupees, 900. The actual cost per test is barely 7 rupees, 8 rupees. So through the economies of scale, through the volume of the business, this person has revolutionized the preventive diagnostics industry. Nobody understood the importance of health. And the last company I would like to talk about is Quick Heal, a similar story and almost a similarly sized company. This company also has a revenue of around 300 crores. And the person, the founder, Kailash Ketkar, he started this company. I mean, if you go through his story, a small calculator radio repairing shop, and not very far. It's around 94, 96, 20 years ago. He used to earn in hundreds, I could tell you. And then he thought of an opportunity. I mean, this is a very good example of, I would say, visionary leadership. And what I was being imaginative rather. Like this person, his brother was an engineer. He was told that, why don't you go to hardware? Hardware is a better prospect. And he said no. I mean, there is a lot to tell about Quick Heal also, but I'll wrap up fast. One lesson, I really
And these two companies, Thyrocare and Quickkill, I tell you, they are listed companies. I mean, they have their market cap around 1500 crores, just imagine. And these companies were not there 20 years ago. This is something very remarkable. Lastly, I would like to wrap up. These are the 5 things normally to speak on the dais and deliver the lecture. I'm really very much thankful to you, sir. Leading without titles, we should not clamor for a seat of power. We should not count for the number of people to work under us. We should not measure the size of our office. So these are the things that we should forget about. Not about titles. No president, regional director, co-director, additional director. I'm sorry, that is not personal specific. Same goes with me. This is what, it's not about the feelings, more about feelings. Best leaders grow leaders. Leading a balanced life, health is very important. The best leaders are they who maintain their health. The real management, if you want to be a good manager, you want to be a good leader, you need to maintain a good health also. And engaging in philanthropy. The old age management was about leading through scarcity, and the new age management is about leading through generosity. So most of the good companies today, they are increasingly engaging themselves in philanthropic activities, in CSR, in social activities. And this is what is the hallmark today for all good leading companies. I tell you, all these companies are greatly into philanthropy. You just find out Quickkill Foundation, you talk about Amazon's CSR initiatives. Google has been a pioneer, I would say, and one of the leaders in all kinds of philanthropic activities and maintaining a good health. I end it here. Thank you very much. Any questions may come later. Thank you, sir. Respected Sinha sir, Professor Chinmay, Kumar, Dr. Singh, and leaders present here, a very good evening, good afternoon to all of you. Although I see a lot of people have already left, but in the next couple of minutes, I will try to touch upon a few things which I have learned in my life in the last few years of my personal and professional journey. You know, while I was listening to other eminent leaders from the industry, there are a lot of traits which are being discussed. I feel while all of this is important, there is one thing which is essential and common amongst all who are able to do well in life as leaders, is that they are able to inspire others. So there are two aspects of it. One, first of all, in your life, do get some inspiration. They can be your colleagues, they can be people who have done well in life, they can be people from any and every sphere of life. So first thing, you do get inspirations from people around you. Secondly, once you reach to a leadership position, you do certain aspects which inspire other people. There is no mechanism to inspire others, but what I feel is that a leader who is able to do his job well, who is passionate about his work, who believes in people, is always able to inspire others. Now, one person who has always influenced me in my professional journey, one person whom I was always taking inspiration from, was late President Dr. APJ Abdul Kalam. We all know that he himself was an institution of leadership. I would rather talking about his life journey, rather talking about his key sayings. I will say one thing which I learned from him is that you have to dream before it happens, And I've got a very short video to share. It's basically a biography which was narrated by Gulzar Saab. And the biography is almost for 1.5 hours, but I will share just 3 minutes of it. And I recommend all of you to go and listen to it. These stuffs give inspiration to you to do well, to take actions in life. So next 3 minutes. उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह ज़मीन पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतना सी कहानी है मेरी, ज़ैन और आशिमा के बेटे की कहानी। उस लड़के की कहानी जो अखबार में बेचकर अपने भाई की मदद करता था। उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सदनों में आयत
और भाई सोलोमन ने की। उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडित मास्टर ने तालीम दी, एमजी के मैन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना। और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार तालीम और लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। Lunch only once this technical session is concluded, and I am sorry that sizable number of crowd could not avail the good programs, the good views expressed by both of the panelists sitting on the dais. That is why, Dr. Sahab, I have decided to go for lunch only when this session is over. Yes. But somehow or another, the people, Actually, we are not in a mood to somehow or another, the people. discuss and listen. Professor Singh, SP Singh Sahab, our session president, and मेरे गुरु जी भी हैं। So सर तो आप ही का सीखा हुआ है। डॉक्टर स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर Professor Singh. He was given an opportunity to come here and speak before you. Perhaps I am the last speaker. So जितने स्पीकर थे सब कुछ तो बता ही चुके हैं लीडरशिप के बारे में, चाहे वो कॉर्पोरेट कल्चर की बात हो, चाहे लीडरशिप की बात हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। लीडरशिप एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है और समवेयर मैं फील करता हूँ कि कुछ हद तक ये बॉर्न भी होता है, बट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ यू आर ए लीडर, इफ यू आर लीडिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, स्टेट, कंट्री, एनीथिंग, इफ यू आर लीडिंग, यू मस्ट हैव अ विजन कि आपको इसे कहाँ लेके जाना है। जो अभी बता रहे थे कि हमारे अब्दुल कलाम साहब का ड्रीम, यू मस्ट हैव अ ड्रीम, यू मस्ट हैव अ विजन कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाते हो, लेके जाना है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट विल बी अप टू यू ओनली। ऑफ कोर्स यू शेयर इट। अब क्या करना है कि इस विजन को आपको गोल में कन्वर्ट करना होता है, और गोल में कन्वर्ट करने के लिए यू मस्ट हैव एक्शन प्लान। कैसे आप करोगे उस एक्शन प्लान यू विल हैव टू ड्रॉ इफ यू आर ए लीडर, इफ यू वांट टू लीड योर ऑर्गेनाइजेशन। उस एक्शन प्लान के लिए आप टीम बनाओगे। हमारे प्रीवियस स्पीकर्स बता ही रहे थे कि जो कि बहुत लोगों को किनारे छोड़ना पड़ता है, जो आपके साथ दौड़ सकते हैं उनको लेकर साथ चलना पड़ता है। तो यू मस्ट हैव ए टीम, और उस टीम के साथ आपको कंटिन्यूअस अपने प्लान पे आगे बढ़ना है एंड यू मस्ट रिव्यू इट रेगुलरली। आप जिस चीज को भी रिव्यू करोगे उसका ग्रोथ होगा। एनीथिंग विच विल रिव्यू विल इंप्रूव। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं लीडर के लिए, टू गिव काउंसलिंग टू योर सबऑर्डिनेट। अपने जो आपके साथ काम करने वाले आपके टीम प्लेयर हैं उनके साथ आपको हमेशा काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। हो सकता है आप जिस लाइन में काम कर रहे हो आपको भी अपने से ऊपर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। हमें भी कभी, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, कभी एचसीएल पुणे के लोगों से बात करता हूँ, फेलियर में फंसता हूँ तो आई एम टेकिंग काउंसलिंग। IITian से लेता हूँ, IIT दिल्ली से भी लेता हूँ। तो जैसा जरूरत होती है आपको नीचे काउंसिल देना है, और आप विद्वान तो हो नहीं, हर चीज के विद्वान आप नहीं हो। नंबर इतने बड़े, इतना वास्ट आज दुनिया हो गई, इतने वास्ट सब्जेक्ट हो गए कि किसी भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के विद्वान आप नहीं हो सकते हो। सो आपको क्या करना है, आपको जरूरत पड़ने पर आप ऊपर से भी काउंसलिंग ले सकते हैं, ले लो। और एक लीडर वही हो सकता है जो एक लीडर है। लीडर मस्ट बी ए लीडर। अगर लीडर नहीं है तो लीडर नहीं बन सकता है। मैं बहुत सब लोगों से थोड़ा हट के बात कर रहा हूं। तो जब आप फील करोगे
कि आप जब भी किसी काम में लेके आगे बढ़ना चाहोगे तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, आपके चारों सराउंडिंग्स में खाली नेगेटिव लोग हैं, सारे नेगेटिव लोग हैं। तो आप तो अपने नीचे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, आप मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन हाउ यू विल डू, अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे? दैट इज ओनली बुक्स, दैट इज ओनली बुक्स। अगर आप पढ़ते हो, बहुत सारे लोग जो बैठे हैं, मैं अभी भी बोलता हूं कि आप बहुत देर नहीं, लेकिन अगर आप हैबिट बनाने की कोशिश कीजिए कि हम 15 से 20 मिनट रोज पढ़ेंगे, ओनली 20 मिनट्स, वेरी डिफिकल्ट, आई टेल यू, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप अगर ये 21 डेज तक ये डिसाइड कर लेते हो कि हमें पढ़ना है, हो सकता है कि आपको नींद आ रही हो तो आप छत पे अपना खड़ा होकर आपको पढ़ लो, ठंड में लग रही हो छत पे जाकर पढ़ो, लेकिन पढ़ना है 20 मिनट। आज टाइम नहीं मिला वो नहीं चलेगा, आज आपको करना है तो करना है। इफ यू हैव ए कमिटमेंट कि हम 20 मिनट पढ़ेंगे, बिकॉज पटना रांची ट्रेन से आते हो, नॉवेल लिए गुलशन नंदा का खत्म कर दिए, वो किताब खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट पढ़ोगे ना तो वो दैट यू विल डाइजेस्ट दैट, और वो जो डाइजेस्ट आपके अंदर, जो आपके अंदर डाइजेशन जाएगा, उससे जो चीज निकलेगी वो एक लीडरशिप निकलेगी। बिकॉज हर चीज तो आप जानते नहीं है। बिल गेट के बारे में हम कभी हमें अगर बिल गेट बनना है तो हम बिल गेट कहां से बन सकते हैं? हम तो बिल गेट हमारे साथ टाइम देगा नहीं। हाउ आई कैन एसोसिएट हिम? बिकॉज कहते हैं एक एसोसिएशन एक ऐसी चीज है कि अगर हम एक डॉक्टर के साथ 6 महीना अगर उसको ऑपरेशन थिएटर में रह लेते हैं तो हम पेट काटना सीख जाते हैं, पेंटिस निकालना सीख जाते हैं। एक टेलर मास्टर के साथ रहेंगे तो हम शर्ट सिलना सीख सकते हैं। अगर एक पॉकेट मार के साथ रहते हैं तो पॉकेट मारना सीख सकते हैं, और 6 महीना अगर एक गंजेड़ी के साथ रहते हैं तो हम गांजा पीना भी सीख सकते हैं। तो what I mean to say that is association. How will get the association of good people? अभी अब्दुल कलाम साहब का जो के बारे में ये बात कर रहे हैं, उनका क्या है? उनकी किताब से ही हम लोग जान रहे हैं। उनके साथ एसोसिएशन हमारा मिल नहीं सका, और कभी आमने सामने भी होने का मौका मिला या नहीं मिला। उस केस में उनके द्वारा जो लिखी हुई चीजें हैं आज वो नहीं है दुनिया में, वो अमर है। और अगर उन थॉट्स को आप 15 से 20 मिनट तक अपने साथ लेकर चलते हो, दैट विल गिव यू very 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 positive impact on your life and to your organization also. Edify your people, edify your people, your colleagues, your seniors, your juniors, सबको आप edify कीजिए। जितना आप उनकी तारीफ करेंगे वो खुश होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। जो अगर कुछ गलत हुआ तो वो मैं किया, और अगर सही हुआ तो इट इज ए टीम, बिकॉज you will have to be a team player. So these are the something about the leadership. Second thing, communication skill. It is also very important for your organization, for anywhere. Communication skill एक ऐसी चीज है कि आप जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो आपके कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नॉन मैट्रिक हैं, आपके साथ कुछ ऐसे भी होंगे जो पीएचडी होल्डर्स हैं, DSc हैं। उन आपको हर लेवल में जो कम्युनिकेशन स्किल है, किसके साथ आपको क्या बात करना है, दैट इज, और किस तरह से बात करना है, ताकि स्वीपर भी आपको उतना ही प्यार करे जितना आपको गवर्नमेंट सेक्रेटरी प्यार करे। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्हें लगे कि नहीं ये तो मेरे हैं। अगर ये हर व्यक्ति को लगे कि ये मेरे हैं, यू आर ए विनर। और उस विनर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक बहुत बड़ी चीज है। सेकंड है फोकस, कि हम फोकस कहां पे हैं, जैसा कि बताया लोग कि परसिस्टेंट रहना होगा, डेडिकेटेड रहना होगा, हम्बल रहना पड़ेगा, ये है। लेकिन क्या आप अपने लोगों को हमेशा एक्साइटेड रख सकते हो? आप अपने लोगों को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हो? कितना मोटिवेट करोगे? 300 स्टाफ हमारे पास है रांची में, कितने लोगों में मोटिवेट कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? और निगेटिव चीज, पॉजिटिव चीज आपके दिमाग में 2% परपेचुएट करता है, और निगेटिव चीज 200% परपेचुएट करता है। आपको बार 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 एक ही बात बोलोगे तब वो दिमाग में घुसेगा। इट इज फैक्ट, इट इज फैक्ट। अगर आप चाहोगे एक बार बोल दिया, सुनिए, नहीं सुनता है, लेकिन आपको नाराज नहीं होना चाहिए। बॉस आप बोल दिया, एक बार हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। अगर आप उसको कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट आपको लगे रहना पड़ेगा हर चीज के लिए, बिकॉज इट इज योर गोल, इट इज योर विजन, इट इज योर मिशन कि आपको कहां लेकर जाना है अपना ऑर्गेनाइजेशन को। तो इन सारी चीजों को देख कर लगता है जैसे, एंड इफ यू आर ए लीडर यू विल हैव टू लीड इट। गांधी जी कभी डंडी मार्च में सब गांव के घर के लोगों को बुलाने नहीं गए थे, वो लाठी लेकर बुला निकल गया,
दुनिया उसके पीछे आ गई। दैट इज द क्वालिटी ऑफ द लीडर। और वहां जब हम लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं बिकॉज यू आर ए कोर। एप्पल आपने देखा है, एप्पल में कितने सीड होते हैं आप बता सकते हो? 2 सीड होते हैं, 4 सीड होते ही होते हैं। लेकिन एक सीड से कितने एप्पल्स निकलते हैं जानते हो? एक सीड से कितने एप्पल होंगे? सो यू मस्ट बिकम ए कोर। आप नजर नहीं आओगे, आपकी टीम नजर आएगी, लेकिन यू मस्ट बी ए कोर। और वो एप्पल के सीड की तरह कि आप 2 ही हो, आप अकेला हो, 2 हो, लेकिन आपके साथ जब आप जर्मिनेट जब सीड करता है तो वो सीड हजारों लाखों में हो जाता है। दैट टाइप ऑफ वर्क वी नीड। विजन भी हमारा बहुत सारा विजन्स जो होंगे एक लीडर का, कुछ शॉर्ट टर्म होगा, कुछ लॉन्ग टर्म होगा, टाइम बाउंड होगा। जैसे अभी हम लोग चल रहे हैं विजन 2020 पे, अभी चल रहे हैं विजन 2030 पे। कब हमें कहाँ पहुंचना है हमारा अपना एक्शन प्लान होता है। और जब इन चीजों को लेकर चलते हैं तो हमें अपने ड्रीम को विजिट करना पड़ता है। हमें कहाँ पर, आज की जमाना क्या हो गया है, आज गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है, चाहे यूनिवर्सिटी का पॉलिसी जो है, अपॉइंटमेंट्स हो नहीं रहे हैं, रिटायरमेंट होता चला जा रहा है, आपके लोग कम हो रहे हैं। आज के जमाना में हर चीज आउटसोर्सिंग से पॉसिबल है। थैंक यू। सो आउटसोर्सिंग करें जहां जरूरत है। बहुत सारे विद्वान है, गूगल है, उसको साथ देकर हम लीड करते हैं तो वी कैन बिकम ए गुड लीडर। और एक लीडर का जो रोल है वो यही है, टू लीड विद ऑल द पैशन। थैंक यू। Great speakers were there in this technical session. One was Mr. Chinmay Kumar ji. So, Chinmay Kumar, please stand up. Please, Chinmay Kumar ji. So, please put your hands together for a very, very nice presentation. And the second great speaker was Mr. Shailesh Kumar. The third speaker, of course, Dr. Ranchi Kumar. So, sir, in the last I must say that the leader's job is to inspire and motivate. So, that I have to say about the leader in that sense. So, friends, in the end, I have to say only one thing about the leaders, that कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं कि मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। वही लीडरशिप का क्वालिटी है। तो थैंक यू। ऑडियंस कम हो सकता है, लेकिन ऑडियंस के नहीं होने का ये कतई मतलब नहीं है कि जो वक्ताओं ने यहाँ पे कहा है उन बातों का सार कम हो जाता है। मिस्टर चिन्मय को हमने पिछली बार भी सुना था, और जैसा कि एस.के. सिंह साहब ने कहा है कि अगली बार हम इस बात का ध्यान रखेंगे। हमने इसी बार इस बात का ध्यान रखा था कि लंच के बाद के सेशंस में लोग नहीं रहते हैं, इसलिए हम लंच के पहले ही सेशंस खत्म करेंगे। लेकिन किसी ने लीडरशिप समिट में किसी ने लीड लिया और ये प्रोसेस जो है, इस जो बनी हुई व्यवस्था थी, इसको तोड़ दिया। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट यू टेक सम इनिशिएटिव, यू डू समथिंग इनोवेटिव एंड यू हैव सम रिजल्ट। समटाइम्स इट इज गुड, समटाइम्स इट इज बैड, but we take risks sometimes. So this was one time when the risk was taken and the result is what we can see here. So we apologize for that कि ये हुआ, लेकिन ठीक है, इस तरह की कोशिशें हमारी जारी रहेंगी कि फिर ऐसी नौबत दोबारा ना आए और हम इनोवेटिव आइडियाज के साथ ही फिर उपस्थित होंगे अगले प्रोग्राम में, जहाँ पे पोस्ट लंच सेशन ऐसा ना हो, ये हम इंश्योर कर पाए। सो वी आर वेरी सॉरी फॉर द पीपल हु आर हियर, बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम हु आर सिटिंग हियर एंड विद अस। हमें उनके लिए एक बार, आप खुद के लिए एक बार ताली जरूर बजाएं। सबके लिए तालियां जरूरी हैं, लेकिन आपने बहुत ही जो बेहतरीन कार्य किया है कि कम से कम लीडर्स को सम्मान दिया है। यहाँ मिस्टर चिन्मय यहाँ पे भी और मिस्टर अभिषेक पाटिल डायरेक्टर आईसेट, तो इन 4 लोगों ने
यादों में बसाने के लिए। तो चाय पी लेने दिया जाए, तब तक मैं राशि जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स की प्रक्रिया हम पहले पूरी कर लेते हैं। सब लोग Thank you, sir. Thank you everyone for coming over here under one roof under the able guidance of Shri Singh, Regional Director of SFM Ranchi Regional Office. It seems very easy to call Ranchi Regional Office, but I must elaborate on this that it consists of 4 major states of the country, including Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh and Odisha. And he is taking care of all these 4 states. And the regional office of this is situated in Ranchi. Thank you, Ajit sir, because without any prior information, you came up to the stage, grabbed the opportunity and gave us such a beautiful views of yours on the topic called leadership. Thank you, SP Singh sir. Your blessings are always there with us right from the word go. You have always been there. Yes sir, you have been the core and heart of the country. Yes sir, you are as a guardian and your blessings are always needed. Shailesh sir, thank you so much for your very precise, confined and superb leadership, your experience on leadership. Chinmay sir, awards are less for you. You have always been there from us, right from the word go. As Singh sir is associated with us, we have a very strong connection with you. And you have always been there to support us. Whether you get 2 minutes time or you get 10 minutes time, you have always been there. So thank you very much. And thank you audience who all are present over here. And the wrap-up speech will be given by none other than our friend philosopher guide, a person great in himself, a person who is a leader in true sense. The Regional Director of SOCHAM, Shri Singh. I would kindly request him to be on the stage and wrap up the session. Thank you everyone. Vice Chancellor, Himalayan University. Prior to that, he was Vice Chancellor with Kumar University. Dr. Kumar Sinha, Director Central Treasury Board. Mr. Shailesh Kumar, General Manager, CMC. Professor Chinmay Kumar, Senior Faculty, Institute of Management Studies, Ranchi University. My friends, everything has to come an end. So this National Summit too need to be officially closed. If you ask frankly from me, I am not interested to end up this conversation or this National Summit where galaxy of 100 people are present. We have heard right from beginning on the very important subject, leadership. I tried my all best to invite the specialists of the different disciplines so that SOCHAM could recognize the best innovative projects, the best services rendered by them. In fact, I wanted to felicitate the leaders who have done some distinguished jobs in their entire career. This SOCHAM National Award has felicitated not only the organizations who have come up with some special services, but at the very same time to an individual also who have played a very special role in shaping the future of the society and future of the nation. My friends, I could conclude by telling that this is the occasion for a leader that arrives awake and do not stop till your objective is achieved. As far as I understand, your strength lies in your goodness, in your purity and service to the mankind. My friends, I always pray to end up the summit or any good job with the saying of Vivekananda, who always said, for an enterprising person, there is no mountain which is too high. There is no ocean which is too deep
and there is no place which cannot be crossed. I make an appeal to all of you present in this hall on this August occasion to make this applicable in our day-to-day life. With this, I conclude my remarks. I conclude my wrap-up speech with once again a very warm welcome and thanks to all of you present in this hall on this important event. Thank you very much. I would request you to present Digital Director Associate Shri to present a memento to Mr. Ajit Kumar, Director, Cluster Research Institute. I would request you to present a memento to Shri Abhishek Pandit, Director, ISEC. Chinmay sir. Chinmay sir and Shailesh Kumar sir. Professor Chinmay Kumar, IAS Ranchi University. Shailesh Kumar To sir. present a memento to Professor Chinmay Kumar, IAS Ranchi University. Shailesh Kumar sir. So sorry, I was mistaken. The speaker of the session is Mr. Shailesh Kumar, GMCSU Private Limited. So this memento is for him for his nice speech at the journey of Abdul Kalam. Okay. Sir, you are the leader of history. It is not easy to lead this much of people, multidisciplinary, multi